the map, sanctioned map which you bring from the authority is not a plain paper. It is a statutory document which has a force of law. सेकेंड सर, जहाँ पे आप बैठे हैं, दिस इज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस, दे ऑल आर लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, एंड यू नो कि फुल्ली राइट हमारे पास नहीं है ना, अथॉरिटी हैज अ बिग रोल टू प्ले even after the completing the building in all manners, with all the NOCs are in place, structure to fire, to lift, to pollution, to environment, everything. Even though they are not issuing the completion certificate, on the ground, or even after the full payment of the premium and lease rent, on the ground of some interest और द फार्मर कंपनसेशन और द बैक डेट में फार्मर कंपनसेशन बढ़ा दिया है, या इवन कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया उनका फार्मर कंपनसेशन, दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू द कोर्ट. इवन कोर्ट का ऑर्डर 2 साल, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर एग्जीक्यूट रहा कि 8.5% से इंटरेस्ट लेना है, अथॉरिटी ने एग्जीक्यूट नहीं किया. सर इन दैट केस अर्बन प्लानिंग एक्ट एज वेल एज द बाई लॉज प्रोवाइड अस ए डीम्ड कंप्लीशन. द डीम्ड कंप्लीशन विद इन 90 days, अगर मेरी बिल्डिंग तैयार है तो वो अर्बन प्लानिंग एक्ट एज वेल एज द अपार्टमेंट एक्ट सभी के अंदर डिफाइंड है. अगर 90 days के अंदर मेरे को कंप्लीशन इशू नहीं हुआ तो उसको डीम्ड मानना चाहिए सर. उससे बहुत उसको जो है कहीं ना कहीं जो है रेरा और हमारे बीच में एक वो आ रहा है. तो पहले रेरा जो आपसे पहले राजीव जी ने एक ऑर्डर उसका निकाला था कि अगर आवास विकास और जीडीए के बाई लॉज में 8 days का वो था कि 8 days के अंदर अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होती है तो डीम्ड हो जाएगा. वो ऑर्डर भी काफ़ी दिन रहा और फिर उसको अमेंड करके 90 days कर दिया गया. तो 90 days में अगर अथॉरिटीज़ डिसीजन नहीं ले रही हैं तो प्लीज़ सर उसको डीम्ड कंप्लीशन जो है मान के हमें अलाउ किया जाए कि हमारी पेनल्टी और वो रुक जाए और हम उसको जो है पोजीशन दे सकें. ये एक मेजर रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ अथॉरिटीज़ के बहुत सारे अलग इश्यूज़ हैं. हमने भी बहुत बार कहा कि बिल्डिंग इज़ ए टेक्निकल थिंग एंड फाइनेंस इज़ ए फाइनेंस थिंग. जो उन दोनों ने उसको ऐसा मिक्स किया है, और क्योंकि इसमें अथॉरिटी के पास ही पावर है रजिस्ट्री करने की, तो वो सारी चीज़ें और कंप्लीशन इशू करने की, तो ये हो रहा है धीरे धीरे. अभी अमिताभ कांत की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, लेकिन लेगेसी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ये एक प्रॉब्लम है. तो उसमें हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि डीम्ड वाले को दोबारा से कंसिडर किया जाए. आपने 2-3 पॉइंट्स कहा. देखो डीम्ड का वो ऑर्डर अभी भी वैलिड है. इट वाज 90 days, then there was a government of India directions of ease of doing business, it was made 8 days. It was against statute. Therefore the authority found it that 8 days is not as per statute, so it was again made 90 days, which is applicable even now. The problem is that as per the rulings of the constitutional courts, it is OCCC. So possession or OCCC, whichever is later. So there is the catch. Now the government in its wisdom had tried to solve the issue of these 3 industrial authorities of the sublease, right, which is done by them, because some money is to be paid in the shape of interest, penal interest, principal amount, premium amount. They stop the sublease and they don't do the sublease, and whereby you suffer, and more than you, even the home buyer suffers. Despite paying everything, he is not getting his registry done, his possession, and therefore he feels, yeah, I am running high and dry. Now, in its wisdom, the housing department in 2002-2003, because I was part of the housing department, we were the first to, this was there in all authorities. It's not only in these industrial authorities. It was under the Urban Planning Act also. But government took a policy decision that you pay 10+2% and get freehold done on day 1. So all development authorities under the Urban Planning Act 73, the SARDA and the RBO, they all are now freehold property on payment of 10+2. Except Noida, Greater Noida, YEDA and UPS, IDC and all these industrial authorities. Because of which this report had come. But I keep asking all the 3 CEOs, even now, many developers have not availed that advantage. You know, we and the IIDC and the CEOs, we had to go and convince our finance department, and the Honorable Chief Minister was also very proactive that he wanted this problem to get resolved of the registry are at hold.
And it's not one registry or 100 registry, it's running into thousands. So he said, do anything but get these registries done. And the reason it was not being done because of the sublease aspect of the industrial authorities, their laws and bylaws. But government had taken a good haircut and asked the authority to take a good haircut. But how many developers? I keep asking all the three CEOs. Up till now, uh, hardly around 4 dozen developers have taken, less than four, 3 dozen, rather less than 3 dozen developers have taken advantage of that. Why are we not taking advantage of that? All those and those who have taken advantage and made that payment, their registries, and let me tell you, to put the pressure on bureaucracy, the Honorable CM said, I will come and distribute the registries. This thing happened in NCR itself, in the university auditorium, and you all were there. Now, if government has taken such a big step of a big haircut and has forced the authority, it make available of that opportunity. This is now in your court. सर एक लास्ट मेरी तरफ बाकी से आपका जो डीम्ड वाला है ना, we are working on it. That order is still valid. It has not been quashed by the authority. The order which the SOP and the order which was passed of 90 days, it's still valid. But we have to see what the constitutional courts and on the Honorable RIAT is saying. We are bound by that. सर एक लास्ट इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे डेवलपर्स आज की डेट में एनसीएलटी या सरफेसी एक्ट में इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट रह रहे हैं और वहाँ लेगेसी प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनल डेवलपर का रेरा जो है एक्सपायर हो चुका है, 1 ईयर भी एक्सपायर हो चुका है। उस केस में थोड़ी एक एसओपी आपकी तरफ से आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उन सभी प्रोजेक्टों को एक दिन कंप्लीट तो होना ही है। अगर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, आधी बनी हुई हैं, उसमें कुछ बायर्स हैं, पहले सभी लोगों ने जो इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट लिए उसमें ये मान के लिया कि भाई सेक्शन 8 और 15 को जो है इवोक करेंगे। दूसरा जो है 2/3 जितने भी बायर्स हैं उनका 2/3 की कंसर्न ले लेंगे, लेकिन सम अभी डेवलपर्स आ रहे हैं कि उसमें ये है कि नहीं, उसमें 100% की कुछ ऐसी कंसेंट चाहिए या 90% की चाहिए। तो सर आवर रिक्वेस्ट इज द 2/3 पर्सनस जो बायर्स हैं अगर वो अपनी कंसर्न दे देते हैं तो स्पेशल प्रोविजन करके जो इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक विंडो 1 साल 2 साल की जो है प्रोवाइड की जाए, सो दैट वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए और अल्टीमेट एम योर्स और जो जो पैसा आज की डेट में बैंकों में डाल रहा है उन इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए आपकी तरफ से गाइडलाइंस। सेक्शन 8 में तो आपका 2/3 है. When you go to section 15, then it is, the bar is high. Now, before RERA, we used to say there are two events as bureaucrats. We used to say, one is election. If it starts, it has to end. निर्वाचन का घोषणा हुआ, रिजल्ट आना है. The third is a funeral. Second is a funeral, which is unfortunate example. If it start, it has to end. There is no stay or no injunction. Similar, no, even Supreme Court doesn't interfere in elections. And no courts fortunately interferes in the second example. The third one which I see is real estate. RERA Act itself says that a project which has been grounded has to get completed. Invoke section 8, invoke section 15. We have such good SOPs which are not there in other eras. People keep asking. I am open, my entire team is open, my consultants, everybody are on board, all officers are on board. You also apply your mind. Within the framework of the existing law, you tell me what type of SOPs you want. You give us a proposal, we'll get it examined. The present proposals are good. I have told you section 8, 20 projects are under section 8. One got completed, another is on the verge of completion. Some last, I think 1st of June ke aspas it will get completed. The third one seems that it will get completed. But what about the 17? Now, after section 8, on my behalf, Venkatesh, our senior member, keeps monitoring every week, every fortnight.
But we have also started monitoring at Lucknow.